अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा की हाल है, ठीक हो? जी वी होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों के जो कमेंट्स आते रहते हैं, वीडियोस को इतना अप्रिशिएट और लाइक करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं वो भी मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है। वीडियो का नेम है 1.5 ट्रिलियन प्लान टू बिल्ड इंडिया। अच्छा 1.5 ट्रिलियन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है आई एम श्योर मुझे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप टाइमली वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। India, one of the fastest growing economies in the world, is planning one of the biggest initiatives it has ever done in its history. A scheme that would construct over 9,078 projects and cost a whopping 1.5 trillion US dollars. projects. Yes, this is the National Infrastructure Pipeline of India, and it is going to change everything from building world-class infrastructures to better the quality of life of people to designing strategic projects that would overcome natural disasters. And the most important factor is the creation of energy-generating projects which would affect the public welfare of India. The National Infrastructure Pipeline was introduced by Nirmala Sitharaman, the country's finance minister, where over 1.5 trillion US dollars will be needed over the course of 5 years, starting from 2020 all the way to 2025. Whilst a massive fund is required, it is thankfully financed by several institutions and governments. The central government will contribute 39%, while the state contribute 40%, and the remaining cash needed is by the private sector, which makes up around 21%. These funds are then distributed among various sectors like the energy at 24%, roads at 18%, urban at 17%, and railways at 12%. The biggest projects allocated amongst these are as follows. The transportation sector will see the development of Navi Mumbai International Airport, a $2.6 billion project which will be the country's first urban multi-airport system. The Mumbai-Ahmedabad high-speed rail, one that costs a whopping $14.3 billion stretching 508 kilometers, which will also become India's first ever high-speed rail line. The energy sector, which encompasses the largest fund allocation, will see billion-dollar projects not only in traditional energy plans, but also in more sustainable ones. One of the biggest projects to be laid out ever is the solar power project, which ought to bring forth a cleaner energy production to the country as it stands at the construction cost of $63 billion. The other enormous project in the sustainable area is the wind power project, also standing at similar costs of $55 billion. The biggest scheme that aims to tackle the people is the social infrastructures. This one is set to upsize and upskill the population of India, with projects related to education, especially in the IT and medical field, with smaller proportions going to sports. The other remaining top projects will address both the water and sanitation problems and commercial infrastructures. While not a significant part of the entire agenda, these still contribute to the overall well-being of several industries. The likes of the India International Convention and Expo Center and eco-tourism projects. Such strong investments are much needed for the surge of the population and employment in India, as the country has seen a massive rise in the past years, and the current infrastructure currently will be problematic for future generations if not addressed. Even recently, where unemployment has become a major issue for India, the construction of different projects under the NIP umbrella will introduce a huge vacancy of jobs for laborers, engineers, architects, and other industries affected by the implementation of NIP. The biggest factor, however, isn't the creation of jobs or addressing infrastructure problems in the country. It is the opportunities given by these projects. The market will flourish. Investors, both local and international, will in no time make significant investments and ultimately trigger a virtuous cycle of growth and improvement. These contributions in the market will help the government to achieve the collective goal of $5 trillion in the economy by the end of the 5-year plan. While the plan indeed sounds promising, it does have some loopholes. Experts are concerned mostly about two major factors. The first is the generation of revenues. The plan expecting private companies to invest large amounts of money is rather overly ambitious. The government of India itself announced that they will be reducing the budget in the 4th year of the project to balance the fiscal deficit.
This does not make a lot of sense because a reduction in the budget might put this project to a startling halt. The investors wouldn't want to contribute to a project that has the potential to fail miserably. The other problem is the banking sector. The government wants to invest huge sums of money, but getting that from the current budget wouldn't be that easy. To get thousands of projects started, the government will have to rely on the banking sector for taking some loans. The problem is that the banking sector is already facing a huge crisis. A large amount of time will be needed to generate the funds, which will increase the project's completion deadline, and that may pose a bigger issue later on if the deadlines are ever moved. Anyway, what do you think about India's national infrastructure pipeline? Share with us your thoughts in the comments. Don't forget to leave us a like and follow us for more amazing videos. Thanks for watching. वीडियो बहुत ही अमेजिंग वीडियो था। और वो जो एयरपोर्ट था, नेवी, हाँ नेवी एयरपोर्ट था, वो तो बहुत बिगेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट लग रहा है। और दूसरा जो उन्होंने बताया कि 9078 जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं और 1.5 ट्रिलियन जो है US डॉलर्स इसका बजट है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। और हर सेक्टर में, एजुकेशन में हो गया, वाटर, सैनिटेशन और मेडिकल, स्पोर्ट्स, हर में जो है वो बजट काफ़ी ज़्यादा हाई था। हाँ, और काफ़ी कम टाइम दिया गया, 2025, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया कि 2050, 60, 2025 तक। और इसलिए उसमें प्रॉब्लम भी कुछ आ रहे हैं कि बैंक से लोन लेना पड़ेगा और जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, तो ज़ाहिर बात है इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगे। बाकी हर सेक्टर में उन्होंने स्किल डेवलपमेंट हो गई, रोड हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, कोई सेक्टर उन्होंने नहीं छोड़ा, एनर्जी हो गई। तो इतनी पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है, 276 बिलियन के राउंड अबाउट है, और वहाँ पे 1.5 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो वी आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड। और जो ट्रांसपोर्टेशन में है उसमें भी वो रेलवेज हो गया और एरोप्लेन वगैरह, बसेस, हर सेक्टर में उन्होंने काफ़ी बुलेट ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन हैं उसमें तो वो तो अमेजिंग है ना, वो तो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। 14 बिलियन सिर्फ बुलेट ट्रेन पे लगा रहे हैं और 2.6 बिलियन एयरपोर्ट पे, और इस तरह से ही काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। बहुत सोहना लग्या, गाड़ी इंज मछली तरह गुजरती है, नौकरियां मिलदियां ने, बहुत शहर बहुत प्यारा है, गड्डियां बहुत प्यारियां। जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो फिर जो है वो जॉब्स तो क्रिएट होती हैं सिटीजन्स के लिए। तो ये बहुत इस वक्त पाकिस्तान में भी यही इशू है, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन जॉब्स नहीं हैं। तो इंडिया में भी कुछ लेवल पे है ये इशू, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जॉब्स भी मिलेंगी। और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है वो आप स्किल कर रहे हैं। और एनर्जी में भी बता रहे थे 24%। तो अमेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।